स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 1 का, जो हम लोगों ने क्लास 9th में पार्ट बनाया था। उसी से आगे पार्ट 2 के बारे में हम बात करेंगे। इस पार्ट में हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो पीढ़ियां होती हैं, कंप्यूटर कब से कब तक बना था, किसने इसे बनाया, किस सन में इसे बनाया गया, इन सारी चीजों के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। तो बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। ओके, the generation of computer are various 5 types. First one is first generation of computer. First generation of computer was mainly dependent by the 1946 to 1956. It is the computer where all type of computer are enhanced through the wires and light. Okay, यहाँ पे सभी जितने भी प्रकार के कंप्यूटर होते थे वो सभी विद्युत से चलते थे, लाइट से चलते थे। इनमें जो सबसे एडवांस कंप्यूटर हुआ था उस समय, जो सबसे पहले कंप्यूटर बनाया गया था, दैट वाज नोन एज ENIAC। इट वाज बिल्ट इन 1946 बाय प्रोफेसर जे प्रेस्पर एकॉर्ड एंड जॉन मॉचले। दे आर जस्ट प्रपोज द वेरियस थिंग कॉल्ड वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब, इट इज मेड ऑफ ग्लासेस and it is these type of sizes, and a wire can connect in this vacuum tube and it was got so much warm. Okay, then all type of vacuum tube are warm and computer got on. Okay, इस वजह से आप जान लीजिए कि वैक्यूम ट्यूब जब ज्यादा गर्म हो जाती थी तो वी कैन नॉट सेव एनर्जी, और हम लोगों को कंप्यूटर बहुत ज्यादा देर तक चलाने की जरूरत नहीं महसूस होती थी, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो बहुत ज्यादा देर तक नहीं चल सकता था। इट कैन ऑन जस्ट लाइक 35 to 40 मिनट्स। ओके, वैक्यूम ट्यूब की वजह से ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाते थे। ओके, इसमें सबसे पहला जो कंप्यूटर था दैट आर नोन एज ENIAC। ओके, तो ENIAC आर वेरी बिग इन साइज, और इसकी वजह से उसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता था। दैट्स द प्रॉब्लम। लेकिन इस कंप्यूटर के बनने की वजह से हमारे वो सारे काम बहुत अच्छे से हो जाते थे, जिनके लिए हमें पहले कागजों का इस्तेमाल करना पड़ता था। ओके, नेक्स्ट वन इज एडसेक, एडवैक एंड यूनिवैक। एडवैक, एडवांस डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसे हम खासतौर पे मैथमेटिक वर्क के लिए यूज करते थे। और उसके बाद है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी खासतौर पे जितने भी जैसे पेरोल वगैरह है, जो है प्रिंटिंग वगैरह के लिए जो है, इन सभी चीजों का इस्तेमाल हम लोग यूनिवैक में करते थे। ओके, नाउ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन आर कंप्यूटर आर मेनली डिजाइन टू द वेरियस टू डू द वेरियस टाइप ऑफ थिंग, जस्ट लाइक the second generation of computer are small in size, and it used the various type of vacuum tube to the transfer device called transistor. Okay, transistor are used in second generation of computer. Transistor is very small in size beyond the vacuum tube, because vacuum tube are very big in size and they take so much energy. So why we cannot on so much time to the first generation of computer. When transistor are made, second generation of computer are come in small in size. Transistor are made by William Shockley in year 1947. Okay, second generation of computer are also do so much thing beyond the first generation of computer. Okay, third generation of computer, it is very useful for the human being, because third generation of computer use IC, a main thing of computer which can useful for nowadays also. Okay, IC means integrated circuit. It means small pieces of wooden thing, and it come the various wires into it, and it can replace the transistor and vacuum tube, and computer size are coming very small. Okay, third generation of computer use IC, and it is also use the storage devices into the computer, and we can store all our given data and information into the computer. Okay, so third generation are very useful for the human. Now fourth generation of computer. Fourth generation of computer, as we can say that these time of computer
as we use just like mobile phone, laptop, PC. These are the computer that was related to the fourth generation of computer. Fourth generation of computer was introduced in 1972 to nowadays. Okay, nowadays because we are also use these type of computer in nowadays. So we are related to the fourth generation of computer. Fourth generation of computer uses various two things, just like first one is very large scale integrated circuit, ultra large scale integrated circuit, and main thing is memory, RAM and ROM. Okay, and various type of secondary devices also. Okay, fourth generation of computer are mainly useful for the human being because it take a small space and it give us output many more things. Okay, now fifth generation of computer, as you all know, fifth generation of computer is use the artificial intelligence. Artificial intelligence means just like robotics, super computer and these things. इसकी सहायता से हम लोग वो सारे काम बहुत आसानी से कर सकते हैं जो कि पहले बिल्कुल नामुमकिन हुआ करते थे। जैसे अभी इंडिया ने एक मिशन लॉन्च किया था जिससे आप सभी लोगों ने देखा ना, मार्स मिशन, उसमें भी जो है इन फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का ही इस्तेमाल किया गया था फॉर द फ्रीक्वेंसीज एंड सिग्नल्स। ओके, तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर नोन एज फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर. Okay, classification means types of computer. Okay, types of computer are basically used to relate the various type of computer. Just like computer, as you all know that computer are three types. Computer are three types. Number one, analog computer, digital computer, hybrid computer. Okay, analog computer, digital computer and hybrid computer. Analog and hybrid are used in rarely case. And digital computer are mainly used such type of things. Digital computer are four types. Digital computer are four types. Number one, micro computer. Number two, mini computer. Number three, mainframe computer, and number four, supercomputer. Microcomputer are very small type of computer. It is known as you know that, laptop and PC. Mobile phone, these are also known as microcomputer. Okay, mini computer, those computer who was worked into the bank or railway department or many other things. Okay, these are known as the mini computer. Mainframe computer are used in various type of big companies, IT companies. These computer are used for the servers of the any IT company, are known as mainframe computer. Okay, last one is supercomputer. What is supercomputer? As you know, supercomputer are a type of fifth generation of computer. Supercomputer, just you know that India have several type of supercomputer, Param, Anurag, Anurag 2 and many more things. Okay, supercomputer are various types and it is very powerful computer because we can calculate many things, many more things, many calculation into it. So supercomputer are very useful for the human being. Okay, mini computer, microcomputer, mainframe computer and supercomputer are mainly based on microprocessor and artificial intelligence. Microprocessor are mainly used in micro, mini, mainframe. Okay, supercomputer use artificial intelligence. Microprocessor is a small thing that can process all of given data by the user and it processes very high speed. So microcomputer are very useful for the computer. Okay, digital, आप सभी लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी और आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी सब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।